Hi everyone, let's start the next topic of the AWS Solution Architect exam prep series, AWS databases, where we have our relational databases, data warehouses, NoSQL, Amazon RDS foundation topic. So we will cover all these topics in this video, and this AWS databases is going to be in a three parts. This topic is divided. So here we having a two domain. One domain is highly available and scalable design, and the second domain will be a data security and disaster recovery. So let's start with the topic. What this chapter covers on an exam, that is a design resilient architecture domain, and the second domain is design a secure architecture. So resilient architecture में identify the fundamental components and effective designs, RDS and installing of databases on EC2s, उनके trade-offs, and RTO and RPO designs, elastic and horizontal worker scaling. So ये हम डिजाइन रेजिलिएंट आर्किटेक्चर की डोमेन में पढ़ेंगे, एंड डिजाइन सिक्योर आर्किटेक्चर की डोमेन में AWS एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी सर्विसेज फॉर डेटा, एंड सिक्योर डिजाइन पैटर्न for the cloud deployment, a critical disaster recovery techniques. So we will cover this. So basically this video is going to have a database primer, relational versus NoSQL, data warehouses, and Amazon RDS foundation. In a part second and third, we will add a DynamoDB and a Redshift deep dives. Okay. So two broad families of the databases we have, relational and NoSQL, non-relational. रिलेशनल डेटाबेसेस में क्या होते हैं, स्ट्रक्चर और एसक्यूएल और रिजिड स्कीमा डेटाबेस होते हैं, जिसमें हमारे पास टेबल्स होती हैं, फिक्स्ड कॉलम एंड डेटा टाइप्स की होती हैं। रिलेशनल मॉडल होता है, सो इसमें माई एसक्यूएल, पोस्टग्रे, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, ये सब इंक्लूड होते हैं। नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या होते हैं, नॉन रिलेशनल होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, की वैल्यू और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होते हैं। सो इलास्टिक स्कीमा होते हैं, इसमें कोई भी टेबल और कॉलम स्ट्रक्चर नहीं होता है फिक्स। दिस इज हैविंग Amazon DynamoDB पेपर्स एंड ऑल। सो इसमें DynamoDB, MongoDB, कैसेंड्रा, एचबेस, ये सारे NoSQL डेटाबेसेस होते हैं। ठीक है। सो अगर हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं रिलेशनल डेटाबेस के लिए, तो रिलेशनल डेटाबेस एक स्ट्रिक्ट स्प्रेडशीट टेम्पलेट है जो शेयर्ड है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में। और एक नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या है, इज समथिंग लाइक अ स्टिकी नोट इन अ शेयर्ड फोल्डर, जिसमें हर कंपनी में शेयर है तो हर कोई अपना एक नोट बना रहा है, एंड कैन या डिफरेंट इंफॉर्मेशन, यू कैन ऐड अ न्यू नोट्स in a new shape anytime without asking any permission. Okay. सो एनाटॉमी ऑफ द रिलेशनल टेबल, रिलेशनल टेबल्स में क्या क्या चीजें होती है, तो यहाँ पे अभी एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल, जिसमें आपका स्ट्रक्चर डेटा है कि स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एज। सो स्ट्रक्चर डेटा और में प्राइमरी की होती है, फॉरेन कीज होती है, मल्टीपल थिंग्स होती है हमारे पास रिलेशनल टेबल्स में। सो दिस इज अ रिलेशनल टेबल। OLTP versus OLAP and where warehouses fit. तो OLTP क्या होती है, OLAP क्या होते हैं, और वेयर हाउसेस क्या होते हैं, ये थोड़ा सी अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में देखते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, OLTP ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में होता है डे बाय डे एप्लीकेशन डेटाबेस ऑप्टिमाइज फॉर मैनी स्मॉल फास्ट राइट्स एंड रीड्स में यूज होते हैं। सो बेसिक एग्जांपल इंजन है कि RDS और औरोरा जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में यूज होते हैं। और OLAP ऑनलाइन एनालिटिक्स प्रोसेसिंग क्या होती है, ये रिपोर्ट्स और एनालिसिस में वर्क करती हैं डेटा सेट्स के। सो इट इज ऑप्टिमाइज फॉर द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, जहाँ पे लार्ज और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज की बात होती है वहाँ पे हम ऑनलाइन एनालिटिक्स प्रोसेसिंग का यूज करते हैं, जैसे कि Amazon Redshift। सो अब डेटा वेयर हाउस क्या होता है, डेटा वेयर हाउस एक सेंट्रल रिपोजिटरी कंबाइनिंग डेटा है फ्रॉम वन और मोर OLTP सोर्सेज में। सो ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली यूज ETL, extract, transform, and load OLTP data into the warehouse in batches 1
per day or one per hour or within a 4 hours. Rather than updating in a per transaction or direct update, we are updating in a particular schedule time. So OLAP queries run for a less frequent but but as are much more complex. So डेटा वेयर हाउस एक सेंट्रल रिपोजिटरी है, ठीक है. सो रेड शिफ्ट क्या है? रेड शिफ्ट इज अ पर्पस बिल्ट ऑफ ओलैप. इट्स कॉमन RDS with the a red-shaped OLAP in the same architecture, periodically extracting the recent transaction and loading them into a redshift for reporting. We can use that. Okay, so whenever is going to be asked a OLTP database we are having, we can go with the RDS or Aurora. Whenever it's going to be asked for the OLAP, online analytics processing, we can go with the Amazon Redshift. For complex query or large, any type of scenario you get this, you can go with Amazon Redshift. Why teams reach for the NoSQL? मोस्टली हम नो एसक्यूएल पे क्यों जाते हैं? क्योंकि नो एसक्यूएल एक सिंपल टू यूज है, मोर फ्लेक्सिबल है, RDDBS में से बेटर है, बिकॉज here we achieve a performance level difficult with the relational engine, and skills are horizontal across a commodity hardware. No rigid tables, column semantics, key value or document store. So NoSQL is a key value model is like a giant code check counter. Hand over an item with a ticket number and get it back by the number. No need to describe the item shape, color, content in advance the way a relational schema would require. So we use NoSQL databases because it is simple to use and it is flexible basically. बहुत फ्लेक्सिबल होता है यूज करने में, इसलिए हम हमेशा नोएसक्यूएल डेटाबेसेस के थ्रू ज्यादा बेंड होते हैं, बिकॉज आरडीएस मैनेज कर रहा है रिलेशनल डेटाबेसेस को. एडब्ल्यूएस आरडीएस ऑलरेडी मैनेज करता है, सो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीमा की और इन सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करना होता है, हम सिर्फ अपने एप्लीकेशन पे फोकस करते हैं. आरडीएस क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इट इज लॉन्च इन मिनट्स. Pick a popular engine and start taking SQL transaction right away. Endpoint based access होते हैं, connect via DB endpoint, no SSH and shell access to the host. Automated maintenance, recovering admin tasks, patches, backups are handled by for you. So RDS does not provide a shell access to the deep instance. Restrict the access to the system procedure tables that require advanced privileges. If you need a full OS control or evaluated permission, like install your databases on EC2 instead of RDS, this is a classic trade-off question which is going to be asked in exam, that why we install EC2 instance in EC2 instance database, or why we use RDS. So this is the basic difference. So whenever you want to offloading backup, patching, scaling the application, you can go with the RDS. Or if you want a full OS control or elevated permission, in EC2 you have to install your own database and you have to customize this your according to your requirement. Okay, so 6 supported database engines क्या है? MySQL, which is a widely used, powerful and used shares of the web app. PostgreSQL, rich, open source feature set, multi-availability support. MariaDB, community fork of MySQL, ExtraDB storage engine. Oracle Enterprise Edition, Standard 1, Standard Enterprise, SQL Server Express, Web Standard Enterprise Edition. Amazon Aurora AWS built MySQL Postgre compatible up to 5x performance. So we can use database engines according to their requirement. Database engines को हम अपनी requirement के according use कर सकते हैं. Just let's guess, अगर हमें कुछ rich open sources feature set चाहिए और multi availability support चाहिए, तो we can go with the PostgreSQL. Okay. So SQL and SQL Server require license. Remember that.
AWS offers a license included the bundles of RDS price and Oracle standard editions of the SQL Service Express Web standards, or bring your own license concept for the standard and enterprise edition. Okay, so who owns what? On premises, EC2, RDS, आरडीएस में क्या चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, EC2 में क्या मैनेज करना पड़ता है, और आरडीएस में क्या मैनेज करना पड़ता है. सो ऑन प्रीमाइसेस सर्वर्स पे हमें सब कुछ मैनेज करना पड़ता है. ऐप ऑप्टिमाइजेशन, स्केलिंग, हाई अवेलेबिलिटी, बैकअप, डीबी इंजन पैचेस, ओएस पैचेस एंड इंस्टॉलेशंस, server maintenance, power and cooling, everything you have to manage in on premises. But database on EC2, you have to manage the app optimizer, scaling, high availability, backup, DB engines patches, OS patching, sorry, like everything. Just server maintenance and power cooling will manage by the AWS. This is basically a SaaS concept. Okay, so डेटाबेस ऑन आरडीएस क्या है? आरडीएस में हम सिर्फ ऐप ऑप्टिमाइजेशन मैनेज करते हैं, बाकी सब एडब्ल्यूएस मैनेज करता है. सो वी आर फ्री टू फोकस ऑन और ऐप ऑप्टिमाइजेशन. देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू फोकस ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल की स्केलिंग और हाई अवेलेबिलिटी बैकअप्स, इन सब पे हम जो है क्या बोलते हैं फोकस करें. सो हमारा सारा फोकस ऐप ऑप्टिमाइजेशन पे होता है with the help of RDS, AWS RDS. Choosing a RDS storage is dependent. So मैग्नेटिक और स्टैंडर्ड स्टोरेज के लिए यूज करते हैं जब हमें साइज चाहिए हो, परफॉर्मेंस लेस हो और कॉस्ट भी बेयर मिनिमम हो. लाइक आइडियल फॉर द लाइट इनपुट आउटपुट वर्कलोड्स के लिए हम मैग्नेटिक स्टोरेज का यूज करते हैं. जनरल पर्पस क्या होते हैं? जब हमें साइज प्रॉपर चाहिए हो, लाइक 5 स्टार साइज वी वांट, लाइक ठीक है, परफॉर्मेंस इज ऑन अ मीडियोकर एंड कॉस्ट इज आल्सो मीडियोकर. सो हम जनरल पर्पस एसएसडी यूज कर सकते हैं. इसमें क्या होता है? बर्स्ट परफॉर्मेंस फॉर द स्पाइक्स, ग्रेट फॉर स्मॉल टू मीडियम डेटाबेसेस. सेम जनरल पर्पस स्टोरेज जो है हमारी स्मॉल टू मीडियम डेटाबेसेस पे वर्क करती है. एंड प्रोविजन आईओपीएस एसएसडी, ये IO1 पे वर्क करता है, जिसकी साइज, परफॉर्मेंस, कॉस्ट, हमें सब कुछ A1 चाहिए. तब हम जो है क्या बोलते हैं प्रोविजन IOPS RDS स्टोरेज पे जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास इनपुट आउटपुट इंटेंसिव वर्कलोड्स हो, हैवी वर्कलोड्स हो, एंड वी वांट अ हाई थ्रूपुट और कंसिस्टेंसी, वी वांट scalability or durability we want, so we can go with the provisioned IOPS, and this is also a high cost. So for the most application, we use a general purpose SSD. The GP2 is the right default. So a good mix of the lower cost and the high performance, rich for the provision IOPS only when the workload demands a consistency, high random access throughput. Okay, automated backups and manual snapshot. Automated backups और manual snapshots में क्या difference होता है? Snapshot is also same as the backup. So automated backups में क्या होता है? हाँ, you done by the default and create a storage volume snapshot occur daily in the configurable backup window, retention configurable up to the 35 days and deleted automatically when you delete the DB instance. जब ये डिलीट हो जाता है, जब आप डीबी इंस्टांस डिलीट करते हो, बैकअप भी डिलीट हो जाते हैं. बट मैनुअल डीबी इंस्टांस में क्या होता है? इनिशिएटेड बाय यू एनी टाइम यू वांट. ठीक है, keep until you explicitly delete the restore to the new DB instance at the snapshot states, so not deleted when you delete the source DB instance. So basically RPO and RTO का कॉन्सेप्ट यहीं पे है कि रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव और रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव. रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? मैक्स एक्सेप्टेबल डेटा लॉस विंडो इन अ फेलियर. हम कितना मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डेटा लॉस कर रहे हैं, हमारा रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव है. रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव क्या है? द मैक्स एक्सेप्टेबल डाउन टाइम टू रिस्टोर फ्रॉम द बैकअप एंड resuming processing. So
This is a minor difference. So restoring a backup or a snapshot always create a new DB instance. You cannot restore automated backups or manual snapshot onto existing instances. Okay. Multi-availability zones, synchronous replication for the high availability. See how it works. Multi-availability zones, हम multiple availability zones में अपने servers को रख रहे हैं. Sometimes we are using a master and slave types of database. So availability zone A में हमारे पास primary और master database है. Availability zones to B में हमारे पास standby एक slave database है. In case अगर हमारा प्राइमरी सर्वर डाउन हो जाता है तो हम सेकेंडरी सर्वर्स को स्लेव सर्वर को प्राइमरी सर्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं because it is a replication of the primary server. How it works? So primary instances in a one availability zone and standby in another. Data replicated synchronously and minimizes RPO. Automatic failure to stand by minimizes the RTO and typically a 1 to 2 minutes. The same DNS endpoint before and after failover. No app changes needed. For the database, for disaster recovery only, not a performance or rescaling feature we are using. So multi-availability disorder auto fails over on the loss of availabilities zones availability, network connectivity, or loss to primary, a compute failure or the storage failure on the primary. It does not improve the read performance for that. So for the read performance, you have to use a read replica or elastic cache layer. So this will be going to be a multi-availability zone which provide a high availability of the database. Okay. Scaling up and scaling out. So scaling up is means vertical scaling. We एक single machine को हम और instances a bigger machine बना रहे हैं like changes to a larger smaller DB instances class increase the storage like 6 TB or exceptional SQL servers we want. So minimal effort AWS automates the migration simple but has a ceiling and some trades off we have in vertical scaling. And horizontal scaling क्या होता है? Scale out. More machines, more servers add on, more database servers we can add. So partitioning and sharding across a multiple instances requires the extra app layer routing logic, read replica offload, read heavy traffic, no SQL in DynamoDB, Cassandra built for the in this. So basically, vertical scaling is like replacing a small delivery van with a bigger truck, like same driver, same capacity. But horizontal scaling is just like a hiring a more drivers with a more vans and each handle a part of load, but not you need to dispatch it. Your app logic to route a packages correctly. So basically, read replica we use for this. Read replica supported for the MySQL, PostgreSQL, MariaDB, and Aurora. Data is copied asynchronously, so replica can lag slightly behind the source. This is the exam cheat sheet for the below side slides में जो अभी सारी slides में हमने जो read out किया है this is just a small memorizable cheat sheet we can memorize for the exam that what is RPU and RTO what is OLTP and OLAP so let's meet on the second part Amazon DynamoDB tables throughput indexes and scaling bye see you in the next lecture